Good morning, everybody, and thank you so much for everyone for tuning in on this Saturday morning for this in taking time for this interesting panel that we have. Hi, my name is Sneha Banerjee, and I lead content partnerships for Daily Hunt, and it gives me immense pleasure to today hosting this panel about and talking about the underrepresentation of women in broadcast and other mediums of media. With me, I would like to introduce Miss Divya Vasudeva, radio jockey, podcaster, lecturer, has been in the space for more than a decade now. I would also like to welcome Meera Devi, managing editor, Khabar Lahariya, Shaili Chopra, senior journalist and founder of SheThePeople, a portal that talks about women-centric issues, and Mamta Chopra, senior journalist with DD News. Thank you so much, everyone, and thank you. Welcome to this panel. I think I would just start off by asking each one of you. There is a staggering drop in women representation across print and broadcast mediums of media. ऐसी वो एक कौन सी चीज है जिसके कारण आपको लगता है कि महिलाएं आजकल मीडिया प्रोफेशन को अपना नहीं रही है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है? आई वुड लाइक टू एनीवन कैन start off. I'll start because see, I am from the TV journalism, so I would stick myself to TV. When we come to the broadcast journalism, we usually find that girls, they are aiming to be the anchors, the news anchors, the face of the television. So that is where the problem starts. I have been dealing with a lot of interns, with a lot of youngsters who come from various institutes for us for training with DD News. And when I'm talking to them, what I realize is, when you want to be a good journalist, you have to inculcate certain habits. When these interns are being trained in their institutes, they are not, I feel, told the harsh realities of the ground in the media. You have to, for example, read lots of books to be a good reporter, be a good reporter to be a good news anchor, and so on. So the very beginning of being into journalism has to start from the ground. Now, this is the disconnect which I feel the girls of today are facing. When they come to us, they should be ready that journalism is not just being in the studio with makeup and that's it. No. Journalism means that you have to have your own personality, your own expertise in some aspect of journalism, which you can put forth. This is one aspect where I'm talking only of the beginners. Now, those women who come into journalism and they want to make a niche for themselves, what I feel is that they need the support system. Journalism is one line where you can have breaking news any part of the day. And you have to be available when organization needs you. And you should be ready to, rush into that hustle bustle with all your energy. So basically, Mamta, you're trying to say that people are not prepared. Women, specifically, are not prepared for the harshness or the rigor or the hard work that it takes to get into this profession completely. As a student, when they enter the stream, yes. Okay. Really, I'm not sure that works for me because I was a student and I did 15 years of broadcast before I jumped into digital. I think really journalism isn't always about the training. It's also a lot about how individuals are driven towards what kind of journalism they want to chase, right? I think, for many years we've had this debate whether women are relegated to the features desk, which has also been sort of the very anathema of the way journalism as a sector grew, because they kept feeling that, if it's a woman, let her go do the weekend stories, etc. But I think today there is so much opportunity to create hard hitting journalistic work
very different from the time, let's say, I was a journalist, because we had only cable news back then, and then satellite TV came around. So I think it's not always about the training per se. Trainings are fairly rigorous. It's a lot also about the profession and whether or not it inspires people to go out there, right? On one hand, are women today, why women? Is anyone inspired by the journalism or what we are seeing? So I think that's one big question to ask. And the second part of that is, sorry, Sure. you want to? Sorry. Yeah, I think second part of that is really whether whether to a great extent people are disillusioned and therefore looking for better ways of doing journalism, which necessarily doesn't come in the traditional way of standing out there, right? I mean, this is also a lot to say about what channels are calling journalism themselves. If you're not going to send a reporter where the actual earthquake has happened because you say no, it's good enough for you to stand and read out of your phone in the newsroom, then what journalism are we talking about? Where is the journalist in the making or the journalist in the training at fault here? The newsroom doesn't offer you an opportunity to go to the flood hit Assam, or to an earthquake hit, Even during COVID. I think here also it would vary from institute to, or from the organization to organization. See, right. In certain organizations, private media may have this kind of a thinking, but when it comes to DD News, everybody gets the open chance to do whatever you want to do. If you want to go to the earthquake area, you are welcome to do. And in DD News, in fact, people say it's a public broadcaster. Perhaps these things may not work there. But yes, that's the hard truth, that in DD News, everybody gets the chance. For example, I opted to go into the Netzel areas, into the extreme, in the inner sides of the Netzel areas, and do my stories. And I was given an opportunity. If you want to work, you are there to go. If earthquake, you want to go, you can go. In DD News, at least, there is no distinction between men and women journalists that want kind of story that you want to do. आपको जो करना है, आपको हिम्मत दिखानी है आगे करने की. But what I hear from the private media, yes, there is a difference. So जो मैं समझ रही हूँ यहाँ पे कि मीडिया में जो स्थिति है अभी, उसकी वजह से महिलाएं या इन जनरल लोग जो स्टूडेंट्स है वो पत्रकारिता की तरफ नहीं जा रहे हैं. मीरा जी, ममता जी ने नक्सल एरियाज के बारे में बात की, तो मीरा जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप जिन पत्रकारों को ट्रेन करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिन पत्रकारों को ट्रेन करती, सारी महिलाएं हैं, वो बहुत कम उम्र की महिलाएं हैं और बहुत ही बहुत ही रूरल इश्यूज पे रिपोर्ट करती है, आए दिन कठिनाइयों का सामना करती होंगी. आप बताएं कि आपके हिसाब से क्यों और महिलाएं पत्रकार नहीं बनना चाहती है? आप अपनी तरफ से कौन सी सबसे बड़ी चैलेंज देखती हैं इसमें? धन्यवाद स्नेहा जी. मैं दो तरह से इसको देखती हूँ. एक तो खबर लहरिया की तरह से अगर देखा जाए, तरफ से देखा जाए, तो खबर लहरिया में महिलाएं हैं और बहुत ऐसे इलाकों में, इंटीरियर इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पुरुषों की सत्ता, पुरुष सत्ता है, और अलग अलग तरह की सत्ता हो सकती है. वो राजनीतिक सत्ता हो सकती है, वो पैसों की सत्ता हो सकती है, वो बहुत सारी चीजें हैं. उन सब के बीच में खबर लहरिया जम करके रिपोर्टिंग और ये सारे काम कर रहा है, और इसलिए भी ये अपने आप में कायम है. कायम ही नहीं, ग्रोथ भी कर रहा है कि हम और महिलाओं को जोड़ते जा रहे हैं, लड़कियों को जोड़ते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं. और हम इसलिए स्थापित हो पा रहे हैं कि हम सारी A to Z महिलाएं ही काम कर रहे हैं, इसलिए. तो ये एक बड़ा कारण है. और जहां पर हम आज बात कर रहे हैं कि महिलाओं की मीडिया में जो स्थिति है, उसको देखते हुए मैं जब देखती हूँ कि खबर लहरिया को देख करके, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, बुंदेलखंड में, चित्रकूट, महोबा, बांदा, मतलब बुंदेलखंड का जो एरिया है, MP UP का एरिया, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि खबर लहरिया को देख करके, जब खबर लहरिया की शुरुआत हुई थी 2002 के बीच, फिर बांदा की जब शुरुआत होती 2006 में, तब महिलाएं हुआ ही नहीं करती थी हमारे अलावा.
हम जब बाकी मीडिया की जगह पर जाते, उनसे बातचीत करते और ये कहते कि क्या महिलाएं हैं, तो हमें कोई महिलाएं नहीं दिखती थी, लड़कियां नहीं दिखती थी उस जगह पर धीरे 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 खबर लहरिया को देख करके कुछ लड़कियां तो आई, कुछ महिलाएं तो आई काम करने के लिए, लेकिन उनके सामने बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती थी। एक तो उनको तवज्जो न देना कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं मीडिया के क्षेत्र में, ऐसे समझना कि महिलाएं क्या रिपोर्टिंग करेंगी, महिलाएं क्या पावरफुल लोगों से बात करेंगी, महिलाएं क्या राजनीतिक बीट की खबरें करेंगी, महिलाएं क्या प्रशासनिक लोगों के पास जाकर के बात करेंगी। और ये सब देखने के लिए हमको ये देख करके लग रहा था कि महिलाएं वो स्थिति, वो जगह अपनी नहीं बना पा रही हैं जो बाकी जो मीडिया में और भी है पुरुष हैं, वो लोग उतने अच्छे से जा करके अपने को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, या बातचीत कर पा रहे हैं, या एक अपनी गुट बना रहे हैं, या महिलाओं को ऑफिस के अंदर जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो क्या मिल रही हैं, उनमें कितना कंफर्टेबल है पुरुषों के बीच में काम करने में। एक बारीकी में बात बताऊं, हमने इस पर एक सर्वे भी किया था और स्टोरी भी करी थी कि महिलाएं क्यों नहीं है इन जगहों पर। तो बड़े अखबारों के ऑफिसों से वहां के जो सीनियर व्यक्ति थे उनसे हमें पता चला, उनका कहना था कि अगर उनके ऑफिसों में महिलाएं होती हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा की बात होती है कि उनको सुरक्षा को लेकर के बहुत सोचना पड़ रहा है, या किसी मुद्दे पर कवरेज करना है तो फिर उनको बहुत सोचना पड़ता है क्या महिलाएं कर पाएंगी, या फिर उनको लगता है कि जिस चीज को वो कर सकते हैं, जिस हिसाब से वो पेश कर सकते हैं महिलाओं को, जिस हिसाब से वो पेश कर सकते हैं दुनिया में, जो एक तरह की ढांचे में बिठा दिया गया है महिलाओं को, उस तरह से अगर उनको पेश करना है तो शायद महिलाएं तो अपने हिसाब से पेश करेंगी ना, वो तो नहीं कहेंगी कि 4 बच्चों की माँ अपने प्रेमी संग फुर हो गई, वो तो ऐसे नहीं करेंगी, वो तो थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे ना महिला होने के नाते कि असल में उसके पीछे का कारण क्या रहा है, कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों महिला ने ऐसे किया। तो शायद जी तो ये मतलब सही माना जाएगा कि क्योंकि खबर लहरिया महिलाओं ने शुरुआत की थी, इसलिए आप लोगों को ज्यादा आसानी हुई और महिलाओं को लाने में, क्योंकि जो महिलाएं आपको ज्वाइन कर रही हैं दे मस्ट हैव फेल्ट सिक्योर कि हाँ मतलब जो फाउंडर्स हैं वो महिलाएं हैं और हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो आएगा सामने, हाँ हम जो इश्यूज कवर करना चाहते हैं हमें कवर करने दिया जाएगा। I would like to ask Divya, because you're from the radio medium. It's not a very visual medium, but then you have your Instagram account. You're very active on social media. Tell us, what are the challenges do you think women in your field kind of face? On a day-to-day basis. Thank you, Sneha, and पहले thank you everybody. This is a fantastic panel, and I'm so glad I'm here. मुझे सीखने को बहुत मिलेगा यहाँ से. So I'll put this quickly into 3 parts. One, when I did my masters from Jamia, which was years ago, आज से 12-14 साल पहले, तो उस टाइम पर मेरे बैच में 30 or 32 स्टूडेंट्स में से हम 20 लड़कियों ने क्रैक किया था. NMCRC is one of the most difficult entrants, like we all know, और 1/3 लड़के थे. Cut to today, मैं जब when I was actually thinking about the discussion today, मैं अपने फ्लोर पे देखती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, हम शायद 5% like we are women force at work, or maybe 10%, and there are more men. Yesterday after this discussion, I actually sort of thought why. One, I'm bringing up this term because इस पे मैं बहुत अक्सर बात करती हूँ. So I would just like to mention, मैं एक शो करती थी 8 साल जिसका नाम था माँ बहन का शो, 11 से 2 माँ बहन का शो. And पैंडेमिक के टाइम पे लास्ट ईयर आई चेंज्ड इट टू टेक इट इजी विद दिव्या. उसका एक रीजन ये था दैट आई रियलाइज दैट वन, देयर इज अ पैंडेमिक व्हिच वाज इन द वर्ल्ड, एंड देयर आर पैंडेमिक्स एट होम दैट वी फाइट एवरी डे, एंड आई वाज गोइंग थ्रू माय ओन पर्सनल क्राइसिस आल्सो. एंड आई रियलाइज सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है माइंडसेट. उसमें हम
उसमें हम चेंज ला सकते हैं. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेडियो. हम किसी भी मीडियम में हैं, हमें माइंडसेट से एज अ वुमन हर रोज डबल एफर्ट करके लड़ना पड़ता है. I have realized that I'm a very vocal person. People say जहाँ आती है वहाँ लड़ती है. But these are perceptions people make. But I have realized that in my whatever years, 12, 14 years, मैंने जहाँ पे भी काम किया है, जहाँ पर भी कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, it is purely by hard work and talent. And I had to put double effort. Now I'll agree with Shaili. हम काम अच्छा करते हैं, हम दिखते हैं, we put in effort, we noticed, we also set benchmarks. बट मैं ये चीज मान सकती हूँ, आई हैव इंटरव्यूड एंड आई हैव डन स्टोरीज विद द मोस्ट पावरफुल ऑफ द पीपल, आई हैव बीन देयर. लेकिन मुझे अपने मीटिंग रूम्स में अपनी आवाज सामने लाने के लिए अपने को, बिकॉज प्रॉब्ली आई एम लाइक वन ऑफ द 2 or 3 वुमेन इन द रूम, मुझे डबल एफर्ट करना पड़ता है आज भी to be heard. You know, sometimes I think that people don't take me seriously just because I talk a lot or just because I have opinion on everything. Sometimes I have to say that again and again, and sometimes I really have to put my foot down कि सुनो मैं क्या कह रही हूँ. Last few years, I've realized, yes, a lot of my colleagues have switched their jobs from radio, TV. मैं MCRC से जब आई थी, तो मैं इकलौती रेडियो का कीड़ा लेकर मैं निकली थी. Most of my friends are journalists with all the leading organizations, and I'm a big fan of SheThePeople, Shaili. I get a lot of my content every day from your portal. I follow it very religiously. बट मैंने बहुत सारी अपनी कोलीग्स और अपनी दोस्तों को काम छोड़ते हुए देखा है, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वर्क लाइफ बैलेंस की जब भी बात होगी, इट विल ऑलवेज बी अबाउट द वुमेन. आई हैव सीन हाउ वुमेन वर्क टिल 10 PM, मेन लीव एट 11 PM, लेकिन आदमियों ने बहुत काम किया होता है क्योंकि वो 11 बजे तक बैठे हैं. लेकिन क्योंकि औरतें 10 बजे चली गई रात को, क्योंकि उनको जल्दी थी, दे नीडेड कैब्स, it will always be mentioned next day that she had to leave early and he had to work for an hour extra. But nobody realizes that a woman goes home, and जैसे मेरी मम्मी बचपन से कहती है कि आप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर आप एक औरत हो, घर में किचन का एक राउंड तो आप ही मारोगे लास्ट में. And nobody really notices that it's part of our existence no matter how much we run away from it. I hate working in the kitchen, but I've seen that वो वर्क लाइफ बैलेंस पिछले 3 साल में इतना अफेक्ट हुआ. I've seen women working here for like 10 hours parallel. स्कूल के बच्चों का सिस्टम चल रहा होता है, कीपिंग अ चेक ऑन इट, पैरेलल टू कॉल्स फ्रॉम मदर इन लॉज, क्या करना है, अच्छा बच्चे का ये देख लो. एंड द बॉस नेवर एवर डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन. उसको काम चाहिए तो उसको काम चाहिए. I think that's one reason why this work-life balance has been massively distorted in all ecosystems and not just media. I think it's across the board, right? I mean, what you all are saying is the reason why today SheThePeople reaches close to 5 million eyeballs a month as a website, and across our social network close to 20 million. Why is that? Because people are resonating with what we are talking about as issues. And I commend Sneha and the team for looking at this issue and recognizing that the last 3 years have been particularly difficult. Any pandemic, any crisis around us leads women out of the workforce by force, even if leave their jobs, because somebody has to make the compromise. And somehow in our men our sort of mentality, it's always that the salary, even if lesser in many cases, is more important if it comes from the man than it does from the woman. But I think it's really important for us to talk about one thing, which I think is the silver lining here, which is that today women are, despite all the trolling, despite all the questions. Just before, when we were sitting on this for this mic test, I was going through my own Instagram profile, and so many times people are like, feminists should be murdered, feminist haters, they hate men, this, that, and the other. And I keep telling this, and I say this openly again and again, that today we are going to raise our voice. We are not going to sit back. Meera ji mentioned something that sometimes organizations are like, if they hire a woman, it's like, okay, we have to mold ourselves according to her, we have to work according to, हमें उनकी तरह सोचना पड़ेगा. That's what she mentioned. Mamta, Shaili, you work with DD and you're running SheThePeople. How do you see this as isn't this a big concern? Because if some organization is to hire a woman, they have to write from the perspective of a woman. No concern at all. I think there is the writing from the perspective of women, very important. And I think the point Meera ji made was exactly that. It's not like I'm suddenly creating chairs and sofas of cotton for a woman to sit there like a queen and feel very comfortable. She's coming here because she feels safe to be able to raise her voice. And it's not just even as basic amenities, you have to take care of the safety of the woman. Why we are making. I feel that it varies also. Let me finish my point.
then I just want to make two very important points here, because we're confusing the issue here. Should every single organization with man, women, and other genders have enough facilities for women? Answer to that is yes. There should be no women-focused organization expected to have special spaces for women. Every organization, even men-only organizations who may have female clients, must have enough safe spaces for women. They should cater for bathrooms. They should cater for everything else that they need. I mean, I can't even imagine why this is the thing, right? So there is no gender issue here at all. The second part is about storytelling. Why should women organizations exist? Because a regular organization does not give enough lens to female voice, female perspective, female stories. So when Khabar Lahariya and She the People go out there and talk about certain stories, is because a regular newspaper will talk about farmer suicide. People talk about farmers dying by suicide, but also what happens to the wife with 6 children, of which 2 she goes and sells because she has no money to put food on her table. Look at the difference in the lens we bring. We were talking about celebrities. The biggest news story in the last 1 week from a celebrity point of view was Lalit Modi and Sushmita Sen. What did social media do? They called her a gold digger. What did the entire celebrity world do? Picked up a She the People article, but questioned exactly why a woman should be called a gold digger, because she has chosen to be in love with a man who happens to be rich. Sushmita Sen herself put this tweet out. So the difference of how we do this is not because we are only reporting a story of somebody who's been raped or a celebrity. To me, issues that women face don't change whether you're a rural or whether you are an urban woman, because centrally there are fundamental problems on how we report gender. Right. Mamta, you were saying something. Yes, there are two things. See, first is that raising the issues pertaining to women, talking about the topics which are important for women, and talking about women which matter to the society, to the country, to the world also. Another aspect is women in journalism, working as journalists. Now, when it comes to women, Shaili is right in saying that organizations, all of them are supposed to have facilities for women as well as men. And I think all the organizations currently do provide those basic necessities which are needed for the women or men journalists. Now, what I mean to say is that those organizations which are ready to adjust with the women, the demands of women employees, not sacrificing their work. For example, when I go to my newsroom, I find that in the morning shift, we have lots of women. Not because it suits them. It's comfortable for them because they can balance the work and the family together. Because children come home in the afternoon, they are there with the children and so on. For example, the desk people, packaging, production, camera staff. So all these we find that a lot of women in the morning and in the evening shift. And they prefer, it's not that we don't have the day shift, we do have quite a few of them, but the preference by women is such. And if organization caters a bit, not every day, but a bit to their requirements, and I feel that women flourish more there because they are able to, the organization is sort of, looking into their needs as well. And this looking into their needs या उनकी सोच उनकी जरूरत के प्रति संवेदनशील होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है. मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं महिलाएं ही महिलाओं की सहायता कर सकती है. जहाँ ज्यादा महिलाएं होंगी तो वो महिलाओं के लिए वो संवेदनशील माहौल बना पाती हैं. वो सब संभव हो पा रहा है. और आज के अगर आप देखते हो तो ऐसा नहीं है. चाहे हम प्रिंट की बात करें, मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लेडीज, बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. And I think now even organizations are not after a particular level. They are not at all making the differentiation between men or women while assigning the projects to them. But हाँ, ये दो चीजों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है. मैं तेजस्विनी कार्यक्रम कर रही हूँ पिछले 1 सालों से. मैं उन महिलाओं को लेकर आती हूँ जिनके बारे में जाना नहीं चाहती, उनको लोग जानते नहीं हैं, और उनको भी जिनको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं. लेकिन वो एक मंच में वो इतनी मेल्स आती है, आप पाने के लिए इतनी मेल्स आती है जहाँ पे लड़कियां ये कहती हैं कि हमने आपके एपिसोड को देखा और मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली को बोल सकती हूँ कि ये मेरी लाइफ है, कि मेरे को ये करना है. That is one way of reaching out to every woman of the society, that we as journalists, women journalists, are able to create before them an example that please you can be what you want to be. I think खबर लहरिया में बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे भी ये She the People is exactly what it's doing. हम ऐसे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं जो
जिनको देखकर बाकी लड़कियों में हिम्मत आए, हौसला आए कि हम भी अपनी जगह बना सकते हैं. ये एक इम्पोर्टेंट रोल है एक वुमेन जर्नलिस्ट का. जी जी. Shaili ने rightly mentioned किया यहाँ पे about the Sushmita Sen episode, and I was also completely taken aback as to the kind of opinions people had formed in their heads about what the whole thing is about and how she's a gold digger and all of that. I mean, coming to that, social media, it has become an important aspect of every media person, media executives, and a journalist workflow. Now, when someone writes about someone very powerful, it could be a politician, or it could be a businessman, or just, I mean, I think Dhanya Rajendra had just regularly commented on a movie of a very famous Tamil actor, and she was brutally trolled. Divya, I like to bring you here, bring in your opinion here. First, I mean, you're very active on social media, but at the same time, you represent the radio industry. What are the challenges do you face when you kind of, on a day-to-day basis on social media? A lot, and I get affected. So I know. I mean, it does affect you. Does So it there are does two. it discourage younger journalists as well in your profession? Yes, and I wanted to make a point before this also when you said about younger. मुझे लगता है today where we've reached after working for 10 years, 14 years, हम लोगों को लोग सुन लेते हैं हमारी organizations में. We have a respectable position, we are heard. But people who join in, I think there has to be, when we have inductions and when we have introduction meetings, we need to have some वर्कशॉप्स टू बी डिजाइंड जहाँ पे बेसिक जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. टेक्निकली तो ये स्कूल कॉलेज में भी होना चाहिए. वहाँ पे हम ये चीजों को we talk about it and we forget it. But because I teach students at college and I've been teaching the communication colleges for last 10 years or so, I've realized बहुत massive change आया है. People are very much aware. But once we start working, जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, people don't know how to handle. Listen, we all women come with a lot of issues. There is no doubt about it. I have seen once when a friend of mine who was expecting and she was in her 8th month and she was in the sales department and she asked for something and the other guy says, अरे इसकी अब demands नहीं खत्म होगी, घर की चिड़चिड़ यहाँ निकलेगी. उस टाइम पे वी ऑल लाफ्ड, वर सिटिंग इन अ ग्रुप. ये 7-8 साल पुरानी बात है या 6 साल पुरानी बात है, हम नए नए आए थे. बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज इट वाज बैड. ये चीजें कौन सिखाएगा? सो इट्स एंड दिस इज व्हाट डिस्करेजेस पीपल. 2 बारी आप एटीट्यूड दोगे, तीसरी बारी वो बंदा छोड़ के चला जाएगा. पीपल लाइक मी विल फाइट, पीपल लाइक मी विल गिव बैक. But people who are starting their careers are not ready for all of this. So there has to be some induction training, gender sensitization workshops. Trolling मुझसे handle नहीं होता था, but so yes, I have friends who are very active on Twitter. One, my colleagues who keep taking cases of a lot of authorities all the time, and they are massively trolled. I can tell you that personally, when I've put up videos with Bollywood stars or ministers, I've realized there are two types of people. One who really come and want to see the content. They will come and they will write and actively participate in the content. Two is the वेली जनता जिनको सिर्फ आकर आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, सिर्फ उस पर कॉमेंट करना है और चले जाना है. एंड आई थिंक देयर इज अ थर्ड जनता जिनको इस दोनों से कुछ लेना देना नहीं है. दे जस्ट वांट टू कम एंड राइट. सो one, body shaming to chalo hai. I remember somebody said, Divya, we want you to be on board and we want to offer like a video series. You need to drop down 5 kgs. I said, I don't want to. I mean, I don't want to drop 5 kgs. तो अब क्या करें? But I know if there would have been somebody else, वो पहले बेचारे जिम जाके 2 दिन में 5 किलो कम करते. मुझे नहीं करना है यार. और करना होगा कर लूंगी, अपने लिए करूंगी. 2 is the anti-shaming. So the moment there is a host and there is a guest, the guest could be a 70-year-old woman, कोई problem नहीं. But the minute the host does not look like a typical host, she becomes an auntie. Auntie, what are you asking? This anti-shaming business is so awful today that people don't realize कि आपने तो एक line लिख दी. But people who read the trolls, किसी ना किसी point पे आके आपका breakdown आता है. And I will just make a very, we spoke about Sushmita Sen, yes, वो चीज हुई है. Take Malaika, take Nick Jonas, cradle snatcher, मम्मी बेटा घूम रहे हैं, अर्जुन कपूर. अरे भाई उनकी लाइफ है, जीने दो. It happens with us all the time. The moment we go on live, there would be 20 people saying good things about your content. We'll interact with some intelligent conversation that I try to make on my show. 10 people will come and say, Auntie, क्या बकवास कर रहे हो? No, very valid point, Divya. But मीरा जी, आप जिन जर्नलिस्ट को, पत्रकार को ट्रेन करते हो, वो लोग जर्नलिज्म स्कूल्स भी नहीं गए हैं, आप लोग उनको ट्रेन करते हो, यहाँ लाते हो, उनको बोलते हो कि आप अपना इंस्टा अकाउंट
क्रिएट कीजिए, अपने स्टोरी शेयर कीजिए, लेकिन जब दूसरी तरफ से ट्रोल होते हैं वो लोग या कुछ कमेंट्स आते हैं, उनकी वो लोग उस चीज को कैसे उस चीज से कैसे डील करते हैं, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिली है, और वो लोग जर्नलिज्म स्कूल्स नहीं गए हैं, तो आप क्या बोलती हैं उन लोगों को तब? बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये जरूर से जब से मतलब कि हमने ट्रेनिंग ज़्यादा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मतलब जब से हम चम्मल अकादमी का लॉन्च किए हुए हैं और बहुत सारी लड़कियां आकर के ट्रेनिंग ले रही हैं जर्नलिज्म की। और तो वो जो टाइमिंग है ट्रेनिंग लेने का, उस पे तो बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको फील्ड में उतर कर के जाना होता है, काम करना होता है, तो मुश्किल्स आती हैं बहुत। महिलाओं को लगता है कि वो पुरुषों के बीच में जाकर के इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। उनके गांव के ही लोग होते हैं, या उनके रिश्ते में कोई ससुर होता है, कोई जेठ होता है, या कोई और भी होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्दा चलता है, मतलब कि महिलाओं को, लड़कियों को घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकली तो या तो वो बिगड़ गई हैं, या तो फिर वो सेफ नहीं है और उनको अंदर ही वो सेफ रह सकती हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि घर के अंदर कितनी सेफ्टी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं कि छोड़ करके चली भी जाती हैं, और उनका ये होता है कि नहीं, वो शायद नहीं मैनेज कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से बहुत ये डीलिंग होती है कि ऐसे लोग हैं और वो तो चाहते हैं कि महिलाओं को अंदर ही रखना है, लड़कियों को अंदर ही रखना है। फिर हम भी अगर उनकी जो वो चाहते हैं वो ही कर देंगे, तो जो आज हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से आगे हो रही हैं, मतलब हर क्षेत्र में उनका कब्जा हो रहा है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं, तो फिर वो वाली बात कैसे रह पाएगी। और फिर इसको करने के लिए किसी न किसी को हम लोगों को आना होगा, हमको इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, इस चुनौती से बढ़ करके आगे निकलना होगा। तो शायद इसीलिए यही कारण है कि हम इन सब चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गई कि आम क्षेत्र में देख रहे हैं, लेकिन जब से हम ऑनलाइन हुए हैं, मतलब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हो गए हैं खबर लहरिया में, तो बहुत सारे केसेस होते हैं। एक ऐसी ऐसी जनता है, ऐसी एक भीड़ है जहां पर कुछ कंटेंट है उनको पसंद नहीं आता, वहां पर वो कोशिश ऐसे करते हैं कि वो महिला, वो हमको डिमोशन कर सकें, वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल सकें, वो हमारे मतलब पर्सनल जिंदगी में कीचड़ उछाल सके, बहुत ऐसे शब्द कहें जहां पर हम बैठ जाए, हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन हाँ, शुरू में हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, ऐसे लग रहा था ये क्या हो रहा है, और ये तो बहुत इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे घर के लोग देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं। मतलब महिलाओं को ना ऐसे देखा जाता है कि महिलाएं अच्छी हों, हर तरह से संस्कारी हों, और ये उनको कोई ऐसा कुछ शब्द ना कहा जाए। अगर एक शब्द भी कह दिया गया तो वो बदनाम हो जाएंगी, और फिर महिलाएं बदनाम तो फिर उनके घर परिवार के वो जो इज्जत है वो रह नहीं जाएगी, इस तरह से सोचा जाता है। तो हमें भी कुछ ऐसा लगा था शुरू में, लेकिन फिर हमने इसको छोड़ दिया। हमको समझ में आ गया कि ये जो चीज है ना, वो एक तरह से प्लानिंग के तहत की जा रही है कि इनको मतलब पीछे किया जाए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे, और ये जो इनका क्षेत्र नहीं है वहां पर ये पैर रख रही हैं, ये पुरुष सत्ता को चुनौती दे रही हैं, तो फिर वो वाली जगह ढूंढने के लिए बहुत कसमकस हो रही है। तो इसीलिए शायद उनकी ये कोशिश है, पर हम अब इसको बिल्कुल बिल्कुल जी या शैली। Yeah, so what Meera is saying is so true. But what I also think is happening in parallel, which is giving us all hope, because we are all
We're all people who have been in transitional generations that have seen the quiet and now are beginning to roar, and some of us have been roaring for some time. So I think there's a lot of very very strong undercurrent जो हमें आगे बढ़ा रहा है, and ये बहुत ही cool है क्योंकि मुझे लगता है जैसे अब हम 5 people here are discussing this, the fact that we're discussing this now is actually seeding a little thought in the many thousand million people who are going to watch this through our own and through your Daily Hunt network, etc. Now, why is this important? Because हम लोगों की ये सोच जो है ना, the fact that we are resisting this is itself the movement, and the possibility that these women are now beginning to sound very sure of what they want, or that they're going to back each other. That's a sisterhood, according to me, that is invisible at so many levels, but is working so hard to make things better, make us rethink the way we look at media. I mean, I'm doing a book which will be out next month called Sisterhood Economy. One of the statistics there is very simple. Out of every 1,000 stories in the media, 800 are, and this is India specific, Bollywood, government, and cricket. The balance 200 stories are for everything else, including women's issues. So when people say that you're a women-centric platform, I say we're a women's platform talking about women's issues because they're national issues, and that nobody else is making them into mainstream. Please, nobody call me niche. I don't care about that word at all. There is no such word as niche when it comes to women. We're 750 million women in the country. At this point, female population in India is higher than male for the first time in its history. What are we talking about, right? We are mainstreaming the dialogue, and that is important to not forget. Right. Absolutely, Shaili, and congrats on the book. I would like to ask Mamta here. Mamta, do you think a woman journalist particularly would be careful in choosing what she wants to cover, because she might get trolled brutally, especially in the mainstream media? Let's not write on this particular political party or this big Bollywood actor. Let's not do a negative story, because this might, get me trolled brutally, online. ऐसा कभी हुआ है? Has this ever happened in the newsroom? Normally, it depends upon to what extent are you ready to take it. To what extent are you ready to, go forward with the reporting, and to what extent is your organization ready to take it forward. It goes a lot on that. When it comes to social media, it is not just as a newsmaker, but also as a person. One may have your views. मुझे ये लगता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पत्रकार के तौर पर क्या रिपोर्टिंग करते हो, वो सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आप आगे बढ़कर के मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते हो, कैसे जाहिर करते हो, उसको लेकर ट्रोलिंग होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आजकल हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है लोगों के, अच्छा और बुरा को लेकर सबके व्यूज वजह से, हाँ, और एवरीबॉडी फील्स मेरा हक है मुझे कमेंट करने का, क्योंकि नोबडी इज गोना से एनीथिंग टू यू, तो आपको जो मन में आए वो इंपल्सिवली, you don't think of what you're saying, impulsively you just put forth your views on social media, not even thinking कि आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, जो कह रहे हो उसे दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात है, इसको तो सोचता ही नहीं है। ट्रोलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए है, खासतौर पर महिला पत्रकारों के लिए तो है, लेकिन महिला पत्रकार मुझे लगता है कि जब आपकी लाइन स्पष्ट है आपके सामने कि मुझे इस सोच के ऊपर और मैं सही काम कर रही हूँ, तो वो पीछे नहीं हटते हैं, और एक लेवल के बाद, सिर्फ एक लेवल तक तो आपको हर्ट करता है, सब करता है, एक लेवल के बाद आप इम्यून भी हो जाते हो, आपको पता है कि हमें किसको कान देना है, किसको कान धरना है, किसकी बात को इग्नोर करना है। जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति आपके लिए कुछ लिखता है, देन इट मैटर्स। और मेरे को लगता है ये बात सही है कि जब ट्रोलिंग होती है, जब महिलाओं के लिए कुछ कहा जाता है, तो जो उनको सपोर्ट मिलता है दूसरी तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टसल जो भी चल रही है, आई एम राइट एंड देयर आर पीपल हु आर स्टैंडिंग विद मी बिकॉज़ आई एम राइट, also matters as much as the trollers who feel that you are wrong. So this support system is very very important, and I think women जो महिला पत्रकार होती हैं उनके सामने ये चुनौती रहती ही है कि आपको कौन सी स्टोरी को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी जो लाइन होती है उस लाइन के हिसाब से आपको कहाँ तक जाना है, आपको उसको निर्धारित करना पड़ता है। ट्रोलिंग इज योर पर्सनल थिंग, एज अ पर्सन यू हैव टू हैंडल ट्रोलिंग,
उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ नहीं देती है, उसमें तो आप ही को अपने व्यूज के साथ स्टिक करना होता है, अपने व्यूज को आगे रखना होता है और सबको बताना होता है दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज व्हाट इज राइट. And I think this goes a lot to say about the people who are supporting them. The support is very important. I think women have to be more vocal to support such issues. Support each other, yeah. I think we have a little time, but just want to kind of ask each one of you this one question, and that within, each of you all have been in this industry for so long. आप लोगों ने इतना काम किया है, अपनी capacity में आप what is that one thing that you would like to change for women journalists in the industry? So what's that one single thing? I'll anyone can take a start over here. I think the voice broke. If you could just ask the question. Sure. I think what's that one thing that you would like to change for women in journalism within your capacity, since you all have been in the industry for so long? Yeah. So Divya, would you like to take a shot at it? Yeah. No, I'll actually think about it. Let me think. Okay. What would I want to change? Yeah. Yeah, Shaili, anyone can. Okay, I would like to say one thing here. Yeah. You know, in my experience in the media industry, what I felt was that every woman has to stand for herself. हर एक को अपने लिए ही खड़ा होना होगा, लेकिन ये जो हिम्मत चाहिए होती है ना हर लड़की को कि मुझे आवाज उठानी है, मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, हमारे साथ महिलाओं की यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रहा है, तो वो आवाज उठाने के लिए सबको साथ आना जरूरी है. ये हिम्मत जो देनी होती है, आई थिंक वर्क स्पेस में ये एक दूसरे के साथ हिम्मत देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई फील दैट व्हेन आई जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन, आई वाज अ फ्रीलांसर earlier, I was working with all the corporates and various fields, various organizations. But what I realized was when I joined DD I realized that certain things are not right. But I don't have any right to go and say कि भैया वो लड़की के साथ गलत हो रहा है. Why are you harassing her? क्यों आप उसकी शिफ्ट को लेकर उसको तंग करते हो? I can't say that to the other person, so I have to give support to that girl and give her strength and tell her to see things in the right perspective, and then get that strength and stand up to say that this is wrong, this is right. मुझे लगता है ये जो हिम्मत आनी होती है ना जी, कि हर महिला को ये कहने का हक इस तरीके से, at least I feel that I have contributed a lot. I have been giving strength to women issues to stand up for their rights, and because in the end everybody has to stand up for themselves. Sure. I think that's it. Sure. Yeah. Well, that's really a good point, actually, Mamta. I think that really does sum up what I've been saying also about the sisterhood. But my appeal really is to men who we haven't really paid enough attention to in this discussion, because I really feel that, like in any sector, we're dominated by men. And I think they can play a very constructive role in fixing the environment in which women function, not by giving them, I guess, what are material supports. Those, I think, are beginning to come in. But I think you got to move the needle far more than what seems to be a checkbox on a list of cabs at night and other things. To me, those are the bare minimum. But what is expected is really that I think the men who are listening to this, that they should make an effort to see where are they going wrong? Where could they be more vocal? Where could they support what seems to be an unjust, sort of promotion of a man over a woman? Where can we see that women who have actually reported on certain, let's say, investigations are actually sent out on the front of the field when time comes for it? When it comes to war, send the women reporters there if that's their beat, right? So I think it's one thing to say that all foreign policy correspondents are equal men and women, but let's see how many of them who went to war, right? That's the test of the role. So I think my appeal generally is to say that it's very important to have men in every conversation, because the more men are solving for this, the faster other men will learn, right? At this point, the societal construct is such, men are willing to listen to other men much faster than men are willing to listen to women. So I always tell women, make use of that opportunity. Go and find the man who wants to listen to you, and then let him do the work, because he can really manage to rally up this entire effort a little faster. And as long as the message is passing,
It doesn't matter how. So I would just say that we should have more discussions on this issue, have more male editors here who are spending less time focusing just on the me of their media business and focusing on how to take everyone together. जी थैंक यू शैली एंड मीरा जी, आप शायद बीच में ऑफलाइन चली गई थी, लेकिन सवाल था कि एक कौन सी ऐसी चीज आप चेंज करना चाहती है, बदलते हुए देखना चाहती है या अपनी तरफ से बदलना चाहती है ताकि और महिलाएं पत्रकारिता प्रोफेशन की तरह जैसे अपना सके? मैं तो चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। मुझे थोड़ा सा खबर लहरिया के हिसाब से ही मैं अपने अनुभव को यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव यहीं पर ज्यादा है कि हम कोशिश इसीलिए है कि उनको समझना होगा ना। कई बारी ऐसे होता है ना कि वो जो अपने आप में लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ शायद सामने वाला व्यक्ति है वो उतना अच्छा नहीं कर सकेगा। तो जो ये वाली चीजें है, ये वाली जो फीलिंग है, सबको साथ में लेके चलने वाली जो बात है, उस पर बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। तभी हम साथ में, चाहे महिला ही क्यों ना हो, चाहे लेडीज ही क्यों ना हो, जब हम एक दूसरे को साथ में लेकर के चलेंगे और एक तरह का ये कि ज्ञान को बांटना ज्यादा से ज्यादा। मैं उतना ज्यादा इस पढ़ाई को लेकर ज्यादा मैं उसमें भरोसा नहीं करती हूँ, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। इसलिए भी क्योंकि मुझे पता है कि खबर लहरिया में अगर आज 20वां साल खबर लहरिया अपना मना रहा है, तो इसलिए मना रहा है क्योंकि हमने सब एक दूसरे को समझा है। हमने नहीं समझा कि उनके पास जर्नलिज्म की डिग्री होना चाहिए, वो दिखाते हुए चलना चाहिए कि देखिए मेरे पास ये डिग्री है, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि उनके पास जो चीजें हैं, जो संसाधन वाली चीजें होती हैं, वो बहुत अच्छे से हैं। उन सबको देखते हुए हम अगर एक दूसरे को समझ रहे हैं, तभी हम कायम रह सकते हैं। और थोड़ा सा ऐसे भी सोचना है कि जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता की तरह होना चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ कि हम अगर शुरुआत करें तो कहाँ पर पत्रकारिता की जरूरत है, कहाँ पर मुद्दे उठाने की जरूरत है, जो दबी कुचली आवाजें हैं, जिन पर नजर जल्दी जाती नहीं है, जिनको खबरें नहीं समझा जाता है, उन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा काम करना, उन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जिस क्षेत्र के लिए हम काम करते हैं पत्रकारिता के लिए, वो चीज तभी सक्सेस हो पाएगी। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ। Yeah, and I would just want to add कि अगर if I had to bring in a change, मैं बस यही request करती हूँ कि when two organizations that when you hire a woman, आप उसको उसके talent के लिए, उसको उसके काम के लिए, उसको उसकी knowledge के लिए hire करो, and don't judge the package कि वो कब आएगी, कब जाएगी, वो कैसे दिखती है. Reason being, I remember one of these hirings that was happening for an intern position, और उसको इसलिए hire नहीं किया गया था in my circle because she was apparently way too hot. एंड अगर वो आती तो फिर बाकी कोलीग्स को फिर कैसे हैंडल किया जाता. आई वाज लाइक ये किसका हेडेक है. I like the girl, I know the girl, she's doing extremely well in Mumbai today, but my point is that, and she was a brilliant radio person, like मैं उसको पढ़ा रही थी, मैं उसको लेकर आई थी because I realized that this girl is like me 10 years ago, she can talk, इसको मौका दो. उसको सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया because she was way too hot. So I just want to say that, you know, when you hire, हम जो है वो तो हम देख लेंगे ना, आप हमारा काम देख लो, हम कब आएंगे कब जाएंगे, we'll handle that too, but please give us a chance. And like sisterhood we've all been talking about, I realize when there are more women, I do see there's good competition also amongst us. महिलाओं का महिलाओं से कंपटीशन के कारण प्रोडक्टिविटी भी बेटर होती है. आई नेवर एवर compete with the guys in the team, I only compete with the women. Fortunately, unfortunately, they work better. And I think just let us work, हमें मौका दो, हम deliver कर देंगे. That's all I want to say. I think if I can add here, I think don't tag women. You know, she's the feminist. I do agree to this. I also seen this. Yeah, I just wanted to add it better work. They are more sincere workers, not only in media. Everywhere you realize, okay, okay, but mostly I find women ज़्यादा strongly reporting करती हैं, women ज़्यादा in-depth reporting कर पाती हैं. And women are able to add that
sensitiveness to the stories which men miss out. Sure. Yeah. So, and so also there's not one difference between how a women reporter reports, how men reporter reports. Sure. And also, I think boxing women as she's a feminist type, she's a housewife type, she's a shy type. I think that also happens a lot at workplaces. So I think that also needs to stop. But it's great, learning so many things from everyone on this panel today. Thank you so much. I wish we could go on, but we are running short of time. So thank you, Divya, Shaili, Meera, Mamta. Thank you so much, and thank you, MASH and Dailyhunt for putting this together. It was great talking to all of you, and more power to sisterhood. More power to all of us, our tribe out there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.